आफ्टर 12 करना है तो फॉर्स करना, नहीं तो वरना कुछ नहीं करना। आई वाज ऑफ दैट ओपिनियन। So hi everyone, today we are with Surya Murugan who got recommended twice in 9th and 10th attempt. So ये interaction हम सूर्या के साथ करेंगे, कुछ बातें करेंगे, how he got recommended, how his journey was like 9th and 10th attempt. Is a pure hardcore repeater. So I welcome you Surya on this platform. So hi Surya, how are you? Hi, thank you for inviting me here. I'm like so happy to be here with you. So Surya, first of all, just tell our viewers and everybody who is just started preparation. So how long this journey was? Like when you started, why do you want to join these forces? क्यों decide करा? This was the question you have faced like 10, 11 times. So what was your journey? Tell us about that. Okay, like coming to the first part, basically I started my preparation back in 2017, September 1st को. My first attempt was in September 1st. This was 10 plus to BTech. And I got recommended in the year 2022 September 13th. पहले recommendation तब हुआ, उसके बाद 2023 February पे हुआ था. So like 2 recommendations back to back. The reason being is that like my dad served in the army, so obviously it was my first inspiration. उसके बाद like obviously the normal जो people बोलते हैं वैसे like uniform, adventure lifestyle वो ही है. पापा था मेरा बहुत बड़ा inspiration. ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया था बैक इन 2000 दैट ईयर, आफ्टर दैट लास्ट जब रिकमेंड हुआ 9th and 10th अटेम्प्ट में, तो व्हाट यू डिड डिफरेंटली? बिकॉज यही तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लोगों से पूछते हैं कि ऐसा अलग क्या कर दिया फर्स्ट अटेम्प्ट से और आखिरी अटेम्प्ट में, क्या अलग किया? लाइक मतलब बहुत बहुत रिफाइन किया, बहुत सीखा मैंने. लाइक इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई डिडंट प्रिपेयर. मैंने सोचा कि लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट मिला, टीए भी मिलेगा, जाऊंगा बस मस्त करके आऊंगा. That was my first initial impression. Actually, I didn't have the impression that I had to get recommended. So it was going till my first, second, third attempt ऐसे हुआ. Then I didn't know where I was going wrong. This is something which everybody faces. I didn't even know where I was going wrong. Agreed. I thought कि I was doing bad in my interview. फिर सोचा कि I was doing bad in my GTO. ऐसे ऐसे हुआ. फिर I had it like during my sixth attempt, I guess I had a talk with one of my friends whom I met in my IMA attempt in Allahabad. So he was the savior. उसने बताया कि like तेरा GTO अच्छा है, तेरा interview अच्छा है. He said that my psych was going wrong. Only then I came to know that I was making a mistake in my psych. So after that I did minor corrections over that, and eventually I was lucky enough to make it. Right. So what happened in the first interview? First interview हमेशा मेमोरेबल होता है, पहली बार आप SSB जाते हो, फर्स्ट एक्सपीरियंसेस होता है, तो कहाँ पे था SSB, कौन से बोर्ड में था? पहला SSB मेरा कोयम्बटूर पे था. I got screened out there. Second was Right. फिर second one was in TS Andhra के था. It was in 20 SSB Bhopal. So out there I was like being too honest. Okay. ऐसे कि I didn't like few teachers in my school. I was telling कि ये टीचर मेरे को परेशान कर रहा था. He was like always scolding me. स्पोर्ट्स खेलने के लिए नहीं, like they never leave me for sports. I was like being blunt. Okay. To the point blunt. So you said everything. So like I think that जो मन में आया वो सब बता दिया तुमने, सही सही एकदम ऑनेस्टली. सीधा सीधा. ठीक है. Yeah. तो एज वी ऑल नो कि ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी इन एसएसबी इटसेल्फ, क्योंकि सब कुछ नहीं बताना है ना. तो ये बाकी लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं जो पहली बार जा रहे हैं कि भाई एसएसबी में सब कुछ नहीं बताना होता है, बहुत सेलेक्टेड चीज़ें ही बतानी होती हैं. तो लाइक इन 9th and 10th अटेम्प्ट, 9th अटेम्प्ट कौन सा एंट्री के लिए तुम रिकमेंड, आईएमए के लिए, राइट? सीरियस आई में. ठीक है, तो क्या डिफरेंट, जैसे 8th अटेम्प्ट दिया वो कब दिया और 9th दिया, तो उसके बीच में कुछ गैप था, क्या प्रिपरेशन किया, कुछ अलग किया या जस्ट ऐसे गए एंड परफॉर्म्ड एंड यू गॉट रिकमेंडेड? कुछ तो अलग रहा होगा. हाँ, like after my sixth attempt, what happened was that मेरा psych, I improved upon my psych. I came to know that क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना है. और मेरा 7th और 8th attempt I was borderline case. Like क्योंकि मेरा discussion went around for 20 minutes और conference पे I was grilled. So I came to know that I had chances, तो थोड़ा थोड़ा improvements वहाँ इधर करना है. The main reason in my 7th and 8th attempts I didn't make it because I थोड़ा blunder किया मैंने in my interview, personal interview. So that costed me 2 attempts. उसके बाद it went smooth. ठीक है, तो अभी बीटेक एंट्री से डायरेक्ट एंट्री में कभी गए थे, लाइक सम एंट्रीज डायरेक्ट में, एनसीसी टेक एंड एवरीथिंग? हाँ, उसमें क्या हुआ? एक बार गया हो तो एनसीसी टेक के लिए गया था, स्क्रीन आउट सीधा.
ठीक है, तो उस एंट्री Around में 400 reported. They took around like 400 around 400 reported. हाँ, Yeah, they took around like 20-25 I guess. कौन सा बोर्ड था ये, इतने कम ले लिए? 33 कपूरथला कुछ पे है ना, अच्छा, 33 कपूरथला, हाँ, कपूरथला, कपूरथला, 33 34. हाँ, तो उधर गए तो सिर्फ हाँ। 20-25 को लिया, बाकी सबको स्क्रीन आउट कर दिया। एकदम ठीक है, पूरा screen out. मेरी भी एक एंट्री थी, मैं तो ओटी एंट्री से स्क्रीन आउट हुआ कपूरथला में, तो इट्स लाइक कपूरथला तो मेरे लिए भी कुछ ज्यादा लकी साबित नहीं हुआ। तो लाइक यू गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम विच बोर्ड, भोपाल और Yeah. इलाहाबाद? 17 SSB bank and Achha. Mysore, 2 SSB Mysore. Bangalore and Mysore. So how was your experience at Bangalore? Like tell us from that screening process to last जो interview के लिए, because it will show some insight कि कैसे कुछ, because you mentioned कि psychology उतना better नहीं जा रहा था. So what was the picture? What different kind of stories you wrote that कि पिछले attempt से थोड़ा improve हो जाए? और interview जो कि main part है हर SSB का, चाहे army हो, OT हो या INA हो, किसी भी interview का. So how you tackled interview in your Bangalore attempt? First talk about that, क्योंकि वो IMA entry था and everybody dream about ना कि IMA जाना है and everything. So how was हाँ. it? So reporting बहुत कम होते हैं. In my batch there were around like 80 to 90 maximum उतना ही होता है. And they screen quite well, okay? तो screening पे उतना दिक्कत नहीं हुआ. Around like 30-35 screening. And पहले screening was smooth. मेरा like story was quite good. Okay. OER अच्छा गया था और narration भी ठीक ठाक गया था. And GD पे obviously like value addition दिया, so was all in. Right. उसके बाद मेरा the thing I worked upon was my psych, okay? साइक मतलब दिस टाइम व्हाट आई डिड वाज दैट पहले मैं तो बहुत सुपर हीरोइक स्टोरीज लिख रहा था. मैं एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम हुआ, आई चेंज द कंप्लीट ज्योग्राफी, आई मेड न्यू ब्रिजेस, न्यू सब कुछ मैं ही कर रहा था. सुपरमैन स्टोरी. तो दिस टाइम आई एंश्योर दैट आई रोट वेरी बेसिक स्टोरी. जो मैं क्या कर सकता हूँ, आई रोट स्टोरीज फ्रॉम दैट. लाइक यू नो राइट, आई डिस्कस वन स्टोरी विद यू. जैसे एक बंदा है, वो रेंज पे आ रहा था. हाँ. उस पे आई टेल यू व्हाट आई रोट. I know the story that he's studying in his room. So he had this like urge of eating pakoras. Okay. When it rained, he had the urge of eating pakoras. He went to get all the stuff, helped his mom, made pakoras, ate it, enjoyed with mom, danced, then went back to studying. यही मेरा story था. Literally, I wrote the same story there. Okay. So it was as simple as that. And coming to my interview, बहुत प्यारा interview था यार. Like I was very lucky to get vice president at my interview. Okay. So in that, I think I answered almost every question. The only question which I missed out was something from my graduation background. Even that he answered himself. Oh, बेटा ऐसा नहीं रहता, ये तो होता है. Like he explained me to that. So I was like lucky enough to get such a nice interviewer. So वो भी अच्छा गया. And GTO was like almost good. Like because like usually मेरा GTO अच्छा चलता था. That time also it went really well. And I knew that like after performing, I knew that I'll be getting recommended. वैसे ही हुआ like feeling you got the feel कि like आ रही है, vibes आ रही है, अभी हो सकते हैं recommend ना. हाँ यार. So like, as you mentioned, I knew. like you mentioned a point, lucky enough to get the interview. Do you think कि luck इतना matter कर रहा है SSB में? Like this is the point जहाँ पे repeaters अपनी बात कुछ और कहते हैं, freshers जो first attempt में recommend हो रहा है वो तो कुछ और कह रहा है, assessor कुछ और कह रहे हैं. What do you feel after giving 10 attempts? I feel that luck plays a role because like I'll tell you what, okay, even if you are like the most eligible candidate, Right. you need luck to perform, you need luck to show the assessor that you have the caliber in. क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि like there will be different assessors and their requirements will be different. There will be like some will be like taking you even if you tell one kind of answer, others will be expecting more out of you. Right. So luck does play a role, but 90% you have to work hard. उसके बाद 10 plus, if you work hard for the 90%, बाकी 10 it will happen. Right. So performance based है, जितना अच्छा परफॉर्म करोगे तो luck will sometimes get you inside, like it is there. तो वो तो है. बाकी एग्जाम से मुझे लगता है SSB में थोड़ा सा ज़्यादा चलता है कि which interviewing officer you will get, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, and जो आंसर आप दे रहे हो उससे सेटिस्फाई होने वाला है कि नहीं होने वाला है ना. तो थोड़ा सा वो पर्सनल बायसनेस रहता है. तो आफ्टर यू गॉट रिकमेंडेड, सो हाउ हैज़ बीन द मेडिकल प्रोसीजर? लाइक मेडिकल्स चल रहे होंगे, फिर 10 दिन बैंगलोर में ही था मेडिकल, क्या था उसमें? For army, the medicals was held in Command Hospital Air Force. It's called SHAF. Okay. उधर चल रहा था मेरा medicals. Medical procedure usually happens for 5 days. Minimum it takes 5 days. It can go up to 14 days in other hospitals as well. ठीक है. तो मेरा 5 दिन पे ही खत्म हुआ. So there are like different they check you everything, right from your head to right till your toe. They check everything. Right. So बहुत सारे phases होते हैं. They'll be like checking your eyes, your eyes, overall surgicals, weight,
सब कुछ होता है. Okay. And like if you are like generally fit, you'll get through. Okay. In my case, it was a bit different. I couldn't clear my medicals because I had an issue with my left eye. Yes. So I had that issue. Majority of them have cleared in my batches. Okay. So like IMA की भी मेडिकल्स दे दी, AFA की भी मेडिकल्स दे दी. So which one you feel कि टफर साइड पे थी, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे थे ऐसे सर्स कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. What do you feel? ऐसा कुछ है? I think IMA के लिए like I went for technical entry through Air Force. So IMA was a bit difficult than Air Force. लेकिन when it comes to flying option, no, flying branch, right. तभी बहुत difficult होगा क्योंकि अच्छा. in flying they'll be like checking your eyes thoroughly and also when you like, बहुत sitting positions वगैरह है, they check your measurements, everything they check. So तभी it becomes a bit difficult for flying in Air Force. Apart from that IMA. So when you got recommended तुम eligible थे flying के लिए? You were eligible for that flying? Yeah, I was eligible for flying, but I didn't opt for that. अभी मेरे को पता था कि my eyes were an issue for that, so I was like playing it safe. So right. So what happened in the medicals of AFA? Same thing happens that IMA में जो निकला था वही AFA में भी निकल गया problem medicals में. हाँ, same issue. It's called like मेरा corneal thickness कम था as per standards, so it was like 417 micrometers. When the standards was 450 micrometers. Okay. So they caught me there. So if somebody gets medically rejected, they have two options in their hand. They have a right to appeal. After that, again they have the right to review. So appeal is your right, and review they decide based upon a meeting which they have in their daily base. Okay. So they decide if you are eligible or not, and they give you the call for that. So and in my case, I went for the appeal I went to appeal in Pune for the first time, and second time I went to base hospital. Okay. Whereas दोनों time they will be clearly writing that this is the issue. So when we go there, they specifically take the test for that. So obviously, if you can't do anything about that, you'll be like rejected. In my case, what happened was that my corneal thickness was less. As a result of which I can't do surgery also. Okay. So abhi, it's a case of permanent rejection. Okay. So like you have been to medicals, screen outs देख लिया, medicals देख लिया, recommendation देख लिया, सभी अभी process complete हो गया. Academy वाला रह गया. That is luck based, that is destiny I'll say. So what you will suggest कि जो अभी preparation start कर रहा है, just recently a guy or girl has started preparation, so how she or he should approach preparation को ताकि एक दो attempts में ही he or she should get in. First thing is like try to know the procedure inside out. पहले like get to know that what and all they are expecting, what and all are held, what are the tests in the SSB as a whole. Right. Where if possible take guidance from somebody who's been there or talk with them. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि we'll be having one picture, we'll be having one idea that यही expect करते हैं, and if it doesn't match with what they are expecting, you might get rejected. So it's always better to take guidance if you are having a chance in you, and if not, there are like a lot of free stuffs available in YouTube. Right. So go through that. So like take guidance. Okay. So how many times you have taken guidance, particularly for coaching or any assessor or everybody? Like कहाँ पे कभी गया उधर? Yeah, I've been in touch with one officer who is based in Coimbatore. Okay. उससे like I took help, but it was not kind of like a proper coaching. It was like more of like character building. लेकिन my breakthrough came when I met my friend in Allahabad. He's currently in IMA now. Okay. His name is Anurag Tiwari. I would like to thank him first. Okay. So Anurag pointed out कि ये psychological चल रही problems like you can improve on studies. So after that you with the help of Anurag. Pointed out that. Okay. So you met in sixth attempt, right? Yeah. So he might be captain right now. Captain Anurag Tiwari. No. It's like final term, third term. Okay. He's a third termer. So he got recommended in that attempt or after that? Like he's been to SSB 3 times. He's been recommended 3 times. Oh, he's recommended 3 times. That's right. Yeah. So once you got recommended for IMA, after that कितने महीने बाद AFA की SSB थी? September पे I got recommended for IMA. September, October, November, December, Jan. Almost 5 months. 5 months. So what extra you did? Like nothing. You did कुछ try out करा AFA के लिए या फिर ऐसे just random you got there and you got recommended? I went randomly. मैंने सोचा कि क्यों अटेम्प्ट्स मेरे पास तो चले जाऊंगा, मैसूर घूम के आऊंगा, वही मेरा माइंडसेट था. ठीक है. So tell us about what happened in Mysore. Like in that attempt where you got recommended from screening. Screening was easy process. Like कुछ ऐसा fish market वगैरह हुआ कि it was very smooth. No, I was like used to the screening process. No attempts हो गया तो obviously I was like right. बहुत कुछ देखा होगा. So I was like used with that. Right. तो उसके लिए I didn't do anything as such extra. I didn't do anything extra as such. When the screening हो गया मेरा luckily और
side पे I had like practice enough. Right. पहले I have like practice very much, so stories are like it comes naturally to me. When I see a picture, stories will obviously come to me. ठीक. I had some issues with the speed in which I was writing, so that is an issue I faced because I didn't practice for this attempt. Okay, so somehow I like wrote everything, finished it off. The main problem I faced was during my interview. Okay. He grilled me so badly. Like when I came out now, I felt so worthless. I was thinking कि why am I here? ऐसे grill किया मेरे को. Right. Like I had backlogs during my engineering. Engineering किया तो obviously backlogs होगा. That studios and all. Right. Bunk करता था, वो सब करता था, but with that I got backlogs. ठीक है. He took one point. क्यों backlogs है तेरे को? क्यों 7 backlogs है? क्यों clear नहीं हुआ? I had like one backlog. 7 backlogs थी क्या? 7. 7 8. I'm not sure of the count. ऐसे कुछ. 7. Like I had one backlog. बहुत ज्यादा बैकलॉग्स कर दिया यार. फिर इंटरव्यू ऑफिसर ने स्टार्ट कर दिया बैकलॉग्स पे वाइट एंड ऑल. हाँ. फिर क्या? I had one backlog in the second semester. वो clear करने के लिए कि मेरे को 8 semester तक time. जो engineering mechanics. हाँ. काफी tough subject है. अच्छा. And it took me like 8 attempt. I mean 8 semester तक time निकला. It was like continuously grilling on that. और सोचेगा कि why you're not working? Why didn't you go for work? क्यों placement नहीं? Like I got placed in a company but I didn't take that up. He was asking why didn't you take a placement? क्या हुआ ऐसे ऐसे. It was like grilling me throughout the interview. I was like sweating. Throughout the interview I was like sweating. I was smiling. I was happy. यही चल रहा था. I don't know sir. Right. So interview was Yeah. you feel कि बहुत tough interview at that moment of time. Like it was very grilling at that portion. Yeah, he did grill me like, but like I was keeping my composure and I was like calm throughout the interview. That's what I did. There were so many questions which I was not able to answer properly, as in like a technical general knowledge. I didn't know the answer, so I was husky. बोल रहा था, sir, I don't know, sir. I literally would have told like 20 to 30 times, I don't know, sir. Right. Okay, so Yeah. after interview, how was the GTO? It was normal that you used to perform well, so अच्छा गया GTO. GTO was very average. There were like better performance than me. There were like 2 guys who performed really well than me. So like mine was like very average. कभी when I got the ideas, I used to help the group. I used to like put forth my ideas. Right. If I didn't get the ideas, I would like help in tying, help in carrying the load. वही कर रहा था. Right. So what do you think? Interview की वजह से recommend हुआ. Interview was the most important factor FSB में. It helps you. FSB की interview plays a very big role because like मेरा तो like एक higher ranking officer था. He was the vice president of the board. So if he says yes, nobody would oppose. Obviously, like naturally, nobody would oppose. Right. And I felt like because of my composure and calmness, he was vouching for me. Right. Because you remain calm, है ना? Even after having 7 backlogs and rapid की why this? Yeah, Like I feel कि whole interview is like why and why not? ये किया तो क्यों किया? ये किया तो क्यों नहीं किया? है ना? Exactly. You did BTech, I did not BTech, so they asked me why didn't you did BTech? क्यों नहीं किया? BTech कर लेता तो ये हो जाता वो हो जाता, right? Now Surya, like you have been into 9 and 10 interviews, you got recommended twice, faced screen outs and conference out, medicals, everything you did, right? So as we talked Yeah. about कि कैसे preparation start करना चाहिए, so what do you feel, what should we do while we are preparing for screening? First step, that is a phase 1. So what's your opinion, कैसे prepare करें, how do we perform and क्या की screening at least हर बार होते रहें? What's your opinion on that? So for screening, I believe there are like few steps which you have to like follow without any compromise. Pehli thing is like you have to be excellent in OER. Okay. No matter what, you should at least bring OER 2. I wouldn't suggest you to bring OER 2, but always stick to OER 1. That is something which is in your hands. Okay, OER 1 is a must. उसके बाद write a story which is very relevant to the picture. कभी कभी ऐसे होता है कि your story would be extremely good, but it won't be relevant to the picture shot. So in that case, obviously they're going to reject you because your perception is wrong. Right. That's second thing. Third thing is that you have to have a very good crisp narration. When you tell the story now, it should be like very crisp, within 50 seconds, try to finish it off. These 3 things are in your hand. If you do these 3 things, almost like your 70% to 80% of your work is done. Right. Uske baad, then comes GD. Right. In GD, it's going to be, if you're a fresher, there might be chances that everybody will get a chance to speak. If you're a repeater, I'll give you in writings, it's going to be a fish market. Right. I'll give you in writing. At that time, at that time, value addition becomes a main thing. If you're having good points which adds value to the group story, give it. I would suggest like speak 2 to 3 times in the group, you're good to go. If you do these things, you will surely get screened. Okay, so like you have been, how many times you have been screened out before getting recommended conference? How many screen outs are there?
3 screenshots I guess, 3. उस फेज में व्हाट वेंट रॉन्ग इन दोज स्क्रीन आउट्स बिकॉज यू हैव बीन स्क्रीन आउट तो कुछ हल्का फुल्का गलत हुआ होगा लाइक फ्रॉम योर एंड जो हाँ, फील हाँ. होता है तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या उस टाइम पे इम्प्रूव करना चाहिए था तो सही हो जाता फिर Okay. In my first attempt, I didn't prepare. I just went like that. Okay. So Lack it was of my lack of preparation. राइट Second attempt पे वो SSD tech का direct entry. I think I performed really well there. ओके I felt I performed really well क्योंकि मेरे को लगा था like I would get screen in लेकिन screen out हुआ and luck plays a very vital role in your direct entry. राइट Third पे it was for Third पे it was for ASCAT. ASCAT पे narration was good, story was good. I didn't participate in GD. I was like मैंने सोचा कि like if I keep calm, I'll get screened in. There is a blunder I did, so I got screened out. That is like worth it. I should have got screened out only for that. So you have been to INA SSBs, IMA, and for like Army, Navy, and Air Force, you have been to 3 SSBs, right? 3 boards. Yeah. So what do you feel? Are these 3 boards are assessing candidates differently in screening, or they are assessing in the same way? Screening, I feel कि Air Force gives more importance to your GD part for repeaters because Okay. what happens in the repeaters batch is that all their narration is like extremely good. All perform very well in their narration part. So more emphasis is given on your GD for Air Force is what I believe. In Navy, I've been to Navy only once, so I don't know have much knowledge about that. For Army, I guess like they judge everything equally. Okay. They look after your narration, they look after your GD as well. So it's all about कि तीनों में अच्छा करना पड़ेगा. आर्मी में एयरफोर्स जा रहे हैं तो हाँ. जीडी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से देख के जाना पड़ेगा, राइट? Yeah. लाइक एज यू Yeah. मेंशन कि इन योर सेकंड अटेम्प्ट यू गॉट स्क्रीन आउट बट आपको लग रहा था कि आप हो जाओगे ना दैट एसएससी टेक एंट्री. सो एट दैट टाइम वो वाली Actually, that was my third year quota. फोर्थ तो इधर यू गॉट स्क्रीन आउट राइट 400 कैंडिडेट्स एंड एवरीथिंग. सो व्हाट डू यू फील हाँ. कि हाउ डू यू फील कि यार इतना अच्छा परफॉर्म किया आई फेल्ट लाइक कि हो जाना चाहिए था एंड देन उसके बाद फिर हाउ टू टैकल दैट क्योंकि वो सबसे मुश्किल होता है ना कि यू गॉन देयर एंड गॉट स्क्रीन आउट इन दैट भीड़ और उसके बाद फिर वापस आना वो तुरंत से घर अभी घर पे बोल के आए थे कि एसएसबी. सो हाउ टू टैकल दैट व्हाट डू यू थिंक कि उस टाइम पे क्या सोचना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे लाइक हाउ टू मेंटेन एवरीथिंग राइट इन दैट सिनेरियो. At that time, I think the best thing would be to like accept the reality. कभी SSS के side पे भी mistakes होता है. राइट क्योंकि like I say like even during my SSB phases, no, even in my attempts which I got recommended, there are much better candidates than me. There are much deserving candidates than me, and they didn't get recommended. राइट So there might be like certain mistakes which they did because of that which they got recommended, but they were as a human they were like really good. Potential भी बहुत अच्छा था. So it's not a like completely what do you call foolproof process. राइट It's like subjective है ना तो depends. तो ये डिपेंड भी करता है कि असेसर आपसे कितना रिलेट कर पा रहा है. इफ इज रिलेटिंग टू यू सो ही विल गिव यू सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स और ब्राउनी पॉइंट्स दैट विल फिर थोड़ा फेवर भी Yeah. देगा आगे चल के. एंड इफ इज नॉट रिलेटिंग टू यू तो कहेगा ये भाई निकाल इसका. Like this is where the luck factor comes into play. right so that personal biasness is there somewhat right you what vibe you are giving to that Yeah. assessor and उससे क्या vibe आपको मिल रही है फिर आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं है थोड़ा सा तो like इतना तो मैंने भी फील करा कि रिपीटर्स दे फील दैट कि हाँ वो कहीं ना कहीं टच रहना चाहिए है ना वो मिलता है थोड़ा सा लक थोड़ा हाँ yeah. So after screen in that you got screened in and everybody so this is your message to the screen in candidates कि कैसे होना है आगे कैसे प्रोसेस में जाना है. तो now what Yeah. and how should you prepare for psychology right you have faced the problem कि stories अच्छी नहीं बन रही हैं you have made out superman stories कि हाँ एकदम सब बदल देंगे दुनिया बदल देंगे ठीक है. So how to approach now you know everything कि हाँ कैसे क्या करना है क्या Yeah. बेस्ट रहेगा. So what's your suggestion कि कैसे प्रिपेयर करें from starting and how to take it to the process की recommend हो जाए. Okay, fine. For psychology, the best advice I would like to give is that keep it simple. Keep it around yourself. Just write stories where you are in the picture and where you can do something about that. ऐसे होना चाहिए कि you should be able to do something about the picture. वैसे होना चाहिए. Like imagine yourself in the picture as the main character and write those stories only which you can do from your side. ऐसा नहीं होना चाहिए कि like you are the chief minister, you are the prime minister, you transformed India within 1 week. It should be superheroic. It should be like very practical in nature. It And should not be like Rajnikant, I would- right? रजनीकांत वाला स्टोरी नहीं होना चाहिए. Exactly. Rajnikant was the right word. Okay. If possible, try to revolve your stories around your PIQ and your SD. Okay. क्योंकि it will be like more relatable, more relevant to your person. So if you do that, it will be like better. Okay. So when we approach a picture, like एक picture देखा 30 seconds के लिए, there is some characters and everything. So
first we write introduction part, then we write what led to the situation, same scenario. So how important that कि कितना detail present करें? Do you feel कि details add करती हैं value कि how the hero did the task and how he performed his actions, कैसे उसने करा, या फिर हम superficial level पे भी देख सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हो गया. तो हवा में लिखना मेरे ख्याल से शायद उतना valuable नहीं होगा. Details और action थोड़ा ज़्यादा present करना चाहिए. What do you feel about that? I feel the same as you feel, like, क्योंकि like, quality actions matter a lot. Right. And one more point which I would like to add here is that along with quality actions, try to be very specific. Right. कभी-कभी मैं तो what I did was that कभी-कभी when I used to write stories on this trip and all, right, I used to mention the name of the train which I went, Okay. name of the hotel which I went, name of the ice cream specific. क्योंकि if I say that I had cashew nut ice cream, I would write that. Okay. Cashew nut ice cream या tender coconut ice cream, and to make it more realistic and specific. So ऐसे भी like if you do that ना, the psychologist will get an impression that okay fine, the guy has done this, it is something related to his life, so Right. you'll be getting brownie points for that. हाँ, and that is the details because it went story यहाँ से यहाँ तक ले जाता है ना कि if you had a train number and everything, नाम भी mention कर दिया Yeah, yeah. ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस से जा रहे थे, like you have mentioned everything, so it gives a real vibe to Yeah. that story जो reality से exist करनी चाहिए, and that's what they are looking for. I feel कि ऐसा है ना. So we should add more True. actions and relatable, as you mentioned कि specific चीजें वहाँ पे mention करना जरूरी है. So now there are Yeah. 11 pictures. One there is a blank picture. So how many times you prepared your blank picture from home itself and वहाँ पे जाके लिखा? कितनी बार करा? Throughout my SSB मेरा blank picture का story same ही था. Same story all I 10 mean, SSBs. same story. So I used to play basketball, so how I prepared my team for a championship. Okay. That was my story throughout the so attempts. recommendation, non-recommendation, everything went same story. Same story. वो common story same. You didn't change about that. That is good. Like Okay. recommendation attempt पे specifics डाला. अच्छा. ऐसे like specific details डाला बस. बस खाली डिटेल्स ऐड करा. तो आई थिंक कि यहाँ से ये चीज Yeah. पिक करने वाला है कि एक्शन डिटेल थोड़ी स्पेसिफिक लिखना ज्यादा जरूरी है. एंड समटाइम्स रिलेटेड टू पीआईक्यू एंड एसडी विल ऐड अ बेटर पॉइंट कि थोड़ा उससे ब्राउनी पॉइंट्स ऐड मिलेगा, रेलेवेंस मिलेगा, है ना, व्हाट यू हैव रिटन. Yeah, true. Okay, so in there is VAT. So how was your VAT? Like you were able to write that. और कैसे अप्रोच करना चाहिए? What do you think कि अप्रोच कैसे करना चाहिए VAT को? I'll tell you what I used to do. Okay, like that is like word association test. Okay, so जब भी एक word मिला, I used to associate with another word, and I used to connect this thing. Let's say accident is the word. Okay. What is coming to your mind? कुछ बोलो, I'll connect it. Like I had written कि riding bike with the helmet prevents accident. For me, like accident is steering. Steering lies the yeah, something of that sort. ऐसे connect करता था. I used to like think of another word and can make a connection in both these words. Okay, That's so it. sometimes word ऐसे होते थे कि आपके दिमाग में कुछ और like word is sex. So what do you used to write? First thought I cannot write in that. So obviously, First thought we cannot write. All the I think 70% of the boys have that first thought कि sex सोच के कुछ आया बढ़िया सा, but they cannot write, है ना. So what is the next thing which you wrote in your VAT? it depends upon how you look at sex, but I would say like sex ratio improve करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, वैसे कुछ लिखूंगा मैं. Maybe like I'm not like very much touch with that, so Okay. I'm not getting words Fine. now. So have you came across with education reduces sex ratios. सेक्स रेशियो? हैव यू केम अक्रॉस दोज वर्ड्स जो बहुत नेगेटिव होते हैं, लाइक एक्स्ट्रा नेगेटिव, वो अचानक से आ जाता है, रेप एंड एवरीथिंग, ऐसा हाँ, कुछ? हाँ, कभी हाँ. कभी ऐसा कोई वर्ड आया जिसमें स्टक हो गया कि यार इसमें क्या लिखूं, इसमें तो वो अच्छा नहीं रहा, कभी ऐसा हुआ? ऐसे वर्ड्स आए हैं मेरे को, बट आई ट्राई टू राइट सेंटेंसेस व्हिच हेल्प्स इन ओवरकमिंग दैट. ओके, स्ट्रिक्ट एक्शन रिड्यूसेस रेप केस, ऐसे कुछ लिखूंगा मैं. सो यू Something हैव to overcome रिटन that. सॉल्यूशंस ऑफ नेगेटिव वर्ड्स, है ना? Yeah, true. Yeah, सॉल्यूशन solutions of negative words. ओरिएंटेड अप्रोच. तो मोर इज लाइक कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की वजह से उसको टैकल करा कि अगर ये वर्ड्स प्रॉब्लम डिग्निफाई कर रहा है तो इसके बाद फिर आपने क्या चेंज करा, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे. तो अगर रेप है या फिर कोई Yeah. ऐसा वर्ड आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए फिर वर्ड सेंटेंस लिख दिया, राइट? सो व्हाट यू सजेस्ट, Exactly. हाउ किसी का वैट अगर अच्छा नहीं है और उसके दिमाग में कुछ और ही आ रहा है, वो वुड शुड और कुड वाला फंडा आ रहा है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट कि कैसे इंप्रूव करें अगर करना है तो वैट? पहले like don't time yourself, okay, in your initial attempts, initial like practice time में don't time yourself, try to focus on your quality मतलब I used to do this, I used to like connect words with different words. ऐसे एक back मिला तो I used to associate with different words और फिर एक link बनाने I try to do that. Right. Eventually with time I was able to perform that. ओके, I mean like the quality improved, so that is what I did. राइट. सो हर बार पूरा वैट हो जाता था, 60 out of 60, उसमें तो नहीं छूटता होगा ना कुछ? हाँ, like
Nah, like I do 60 out of 60. What about almost every time. SRTs? SRTs तो कभी कभी पूरी होती है, कभी पूरी नहीं होती. तो फर्स्ट टेल मी कि रिकमेंडेशन में कितनी SRTs करी थी? बहुत मिथ है इसके अराउंड. Recommendation में I did around like 50, I guess. You did 50 in both of the attempts? दोनों में 50? Around 50. I like AFA पे around like 46, 47. 45 क्रॉस किया मैंने. सो व्हाट डू यू थिंक कि ज़्यादा करना है, कैसे करना है, क्या अप्रोच है? क्वालिटी होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, बड़ा लिखना है, छोटा लिखना है, कॉमा लगा के लिखना है, कैसे लिखना है? दैट इज द मेन क्वेश्चन. व्हाट डू यू फील कि लिखना कैसे है SRT? कैसे भी लिख लो बट क्वालिटी मैटर्स. क्वालिटी और एनीथिंग. ओके. Psych पे what matters here most is your quality. If your quality is good and even if you have written like 30 VAT, 40 SRTs, you'll get recommended. Okay. Quality matters. क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें लुक आउट करनी चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर SRT. Exactly. समटाइम्स क्या होता है SRTs में कुछ ऐसे, एक तो बहुत जनरल SRT सुनी होगी कि सीनियर्स दो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स दे रहे हैं एंड लाइक हाँ. यू आर द, ये तो SRT हर जगह मतलब दिख जाती है, प्रिपरेशन के टाइम पे दिख जाती है. सो व्हाट यू Yeah. रोट एंड हाउ यू रोट, लाइक यूजिंग कॉमास और एवरीथिंग, लाइक कैसे सेंटेंस फॉर्म कैसे करते थे? पैराग्राफ की फॉर्म में या फिर ऐसे जनरल लिखते थे? I usually write after putting commas. ओके. As like let's say he saw an accident. ओके. हाँ. I would write like he went nearby, note down the number of the truck, Okay. comma, tied bandage over his head, Okay. comma, Okay. to call ambulance or like stop nearby vehicle, comma, you used took to him to write hospital, using inform. commas and everything, है ना? तो वो थोड़ा टाइम Yeah. बचाता है एंड दैट वो एक लाइन में भी 1.5 लाइन में खत्म हो जाता होगा, है ना? हाँ, yeah. तो ये ऐसा है कि क्वालिटी अच्छी हो तो अगर 40-45 बैट्स भी करें, SRTs करिए तो चल जाएगा. इट्स नॉट बैड, आई थिंक उतना चलता है ना? Yeah, for repeaters, if you aim, like try to aim for 45 plus, or freshers के लिए it will work. Quality matters most. ओके. सो नाउ व्हाट अबाउट SD में सब कहते हैं कि अंदर कुछ और था, हमने कुछ और लिख दिया, लाइक वी आर सुपरमैन, वी आर सुपर काइंड. सो व्हाट यू यूज्ड टू राइट इन योर SD, लाइक कैसे फ्रेम करा SD फॉर, और दोनों में अंतर क्या था जब रिकमेंड हुए और जब रिकमेंड नहीं हो रहे थे? तो क्या SD में चेंज करा या फिर वही सेम थ्रू आउट द SD कैरी करा? No, SD में तो change किया था. I used to write things which I felt कि more suitable था मेरे को. अच्छा. पहले I used to like go ask them कि क्या क्या करना है. Like I used to take opinion from them. ओके. Mama used to say you are like the best kid. ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है. Then I like started thinking from my own side what I can improve, what can I improve to like build our like make our relationship better. वैसे सोचने लगा. ठीक है. And eventually I got like few mistakes which I was committing. So I wrote that, and I also wrote down the steps which I was taking to improve these things. ओके. So that is something which I did and changed this in that. Pehले I used to write the negative and leave it as such. This time I wrote what and all I was doing to improve that. Okay, so first you write कि what parents are thinking, then you point out that one negative thing या suggestions, and after that you also Yeah. wrote कि उसको कैसे improve कर रहे हो, है ना? So this Yeah, is you exactly. add, and so same for parents, friends and sibling everything same में यही लिखा है ना? Improvement and then Same. कैसे कर रहे हो. And एक question जो SD Yeah. का रहता है कि what type of person you are, है ना? So what you हाँ. used to write in that, what type of person you are, क्या लिखते थे इसमें? Good, humble, kind, sexy, क्या लिखते थे? सेम ऐसे ही लिखता था मैं. Humble हूँ, ऐसे हूँ, empathetic हूँ. Right. So I like I'm a good team basketball player ऐसे. ओके. सो उसमें क्या सजेशंस डालते थे कि ये मतलब मेरी ये वीकनेसेस हैं, आई एम इम्प्रूविंग दैट, या फिर उसको नेक्स्ट वाले पार्ट में डालते थे जहाँ पे आता था कि व्हाट यू वांट टू बिकम? Okay, like what I feel पे I don't write any weaknesses ओके. because like I don't find any weaknesses in me as such because like मेरे लिए I'm a perfect candidate. ओके. So what I can improve is that like others का weakness होता है ना, what parents say, what friends say, Right, what right. teachers say. Right. I try to work upon that also. ओके. I try to like add solutions to that and write that. सो इन दैट कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वुड लाइक टू बिकम, यू ऐड योर वीकनेसेस एंड देन यू आल्सो ऐड की सॉल्यूशन कि क्या कर रहे हैं अभी, उसके लिए क्या इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, राइट? सो दैट वाज योर SD. तो Yeah, ये exactly. दोनों SD सेम रखा था IMA AFA में, या फिर उसमें भी चेंज करा था वो 5 months में? सेम ही था? No, I didn't change anything. I didn't prepare no for AFA, so I just went and wrote the same. You just came there and gave it. Okay, that's cool. So that was Yeah. about कि इस तरीके से साइड टेस्ट पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस में करा, इम्प्रूव करा, एंड दैट इज व्हाट यू सजेस्ट पीपल कि कैसे इम्प्रूव करना है, राइट? सो नाउ व्हेन इट कम्स टू द Exactly. इंटरव्यू, बिकॉज वी बोथ फील एंड एवरी अदर कैंडिडेट, आई थिंक उनको लगता होगा कि इंटरव्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है SSB में, व्हाट आई फील. एंड एज फ्रॉम योर रिकमेंडेशन आई गॉट द फीलिंग कि हाँ, इंटरव्यू इज मोस्ट ऑफ द थिंग. जो क्रैक कर लिया तो वी आर इन 80-90% वी आर इन, अगर कुछ बहुत मेजर ब्लंडर नहीं करा किसी दूसरे में. So what do you feel? How should we prepare for interview? Is there any pattern? क्योंकि interview तो open area है, they can ask anything. So what do you feel? You have been recommended in Army and Air Force. So from both perspective, are there interviews different or same?
तो क्या लगता है, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? Okay, so like there is obviously a difference between the way army takes the interview and air force takes the interview. In army, it's more of like your overall personality along with your knowledge in technical subjects, general knowledge and all. Current affairs वगैरह they give more emphasis on that. Okay. In air force, they look more they're like they're more into your personal life. They don't like concentrate more on your general knowledge and all. So that is the main difference. When it comes to the importance of interview, it does hold a very big Right. importance because क्योंकि like you're talking for 1 hour and you're solely judged upon what you talk in that 1 hour. That's not the case with psych. That's not the case with Right. GPO. So it is a place where you can ace it or break it. Right. कुछ भी decisions to like you might have taken in for all the decisions you have taken in life, there should be some valid reason. Right. कुछ भी कर लो, you have to have solid backing up. क्यों किया, क्यों नहीं किया. क्यों किया, That is क्यों the नहीं thing. किया. That is the funda of interview. Right. So As you said now, why engineering or why not why engineering? not engineering? So it's all about कि अगर हमने लाइफ में ये फिगर आउट करा कि ये क्यों करा, ये क्यों नहीं करा, तो इंटरव्यू विल बी इजी थिंग Exactly. फॉर अस, राइट? इट्स द सेम वे. You should have reasons for everything. ओके, तो रीजनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इंटरव्यू में होना चाहिए कि ये क्यों करा और ये क्यों नहीं करा, और अगर करा तो फिर क्यों करा, क्यों करा, क्यों करा, एंड कीप ऑन गोइंग कि भाई देते रहो. एंड दे Why. एंड आई थिंक दे हैव आस्क्ड वन आल्सो क्वेश्चन कि ये बेस्ट फ्रेंड है तो क्यों बेस्ट फ्रेंड है, टेल अस अबाउट कि व्हाई ही इज अ बेस्ट फ्रेंड. सो लाइक इट्स अ Qualities वगैरह. हाँ, क्वालिटीज वगैरह, ऑब्वियस क्वेश्चन. सो आई थिंक इंटरव्यू की प्रिपरेशन थोड़ा टाइम तो मांगती है, लाइक टू नो अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि अगर आपको खुद के बारे में नहीं पता तो नहीं होगा, राइट? सो व्हाट यू फील कि व्हाट आर द वेज बाय व्हिच वी कैन लुक इनटू आवरसेल्फ, बिकॉज यू हैव गिवन सो मच टाइम टू दिस प्रोसेस, like 9-10 attempts are not that easy thing to go along and carry on. So how to tackle that interview कि कैसे करें, कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि बहुत बड़ा है. अभी तुमने भी बोला कि why and why not, तो वो तो कर लेंगे, लेकिन खुद को कैसे जाने, कैसे टैकल करें कि ये क्यों करा. कभी कभी तो आंसर्स नहीं मिलते, कुछ ऐसे ही कर लेते हैं अपन. करते हैं ना, अभी रैंडम कर लेते हैं ना कि हाँ चलो दोस्त कर रहा तो कर लिया, तो उसको कैसे करना है टैकल? That's a hard question by the way. Like मतलब like it's a semi structured interview. Okay, like हमको पता है क्या क्या पूछेंगे वो. हाँ. Before that itself we know what are the questions they'll be asking. Right. And based upon the answers we give, they'll be like taking us to another thing. So it's always better if you prepare the questions that you're having in your hand. Okay. Friends के बारे में पूछेंगे, parents के बारे में पूछेंगे obviously. So try to find out the answers for that questions beforehand itself and frame your answers. Okay. Friends to qualities you should know. As a qualities and all you should be prepared. ठीक है, तो इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो हाउ डू यू फील कि इंग्लिश कितनी बेटर होनी चाहिए, लाइक कम्युनिकेटिव इंग्लिश वर्क करती है या थोड़ी फ्लुएंट रहेगी तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है? They are looking for a communication skills. If you can communicate what you are thinking, you are good to go. ओके, सो बहुत ज़्यादा हाई फ्लुएंट इंग्लिश उतना मैटर नहीं करती, बात कर पा रहे हैं, समझ नहीं. पा रहे हैं तो चल जाएगा, है ना? जो सोच रहे हैं ना वो तो like communicate करना चाहिए, बस उतना ही है. अच्छा, बस समझा दो अपनी बात सामने वाले को, अगर वो समझ गया तो वेल एंड गुड है. ठीक है, तो इंटरव्यू इज द थिंग कि PIQ एंड एवरीथिंग व्हाई एंड व्हाई नॉट में इंटरव्यू खत्म हो जाएगा. नाउ कम्स द GTO, क्योंकि GTO में बहुत लंबा टास्क है, 2 दिन होता रहता है ना. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द GD itself, लाइक हाउ टू टैकल द GD, कंटेंट बेस्ड GD होता है, तो हाउ यू टैकल द GD इन रिकमेंडेशन एंड व्हेन यू गॉट नॉट रिकमेंडेड, दोनों में अंतर क्या था, डू यू फील इफ एनी? Okay. पहले like before that like your performance in your GT depends upon how well you mend with your group. ओके. ग्रुप से हमारा लेना देना कैसा है, हाउ वी आर गुड विद योर ग्रुप, दैट मैटर्स अ लॉट इन योर GT परफॉर्मेंस. ठीक है. So coming to my GD, I usually don't prepare for GD actually. ओके. क्योंकि मेरे को like ये जनरल अवेयरनेस, वो जनरल नॉलेज बहुत कम है मेरे को. ठीक है. So what I used to do is that I used to put down my opinions. Opinions ऐसे like what can be done, ऐसे जनरल होते हैं ना. How to make India a superpower, how to tell them like education is the best thing you can do, educate कर बच्चों ही करेंगे, वैसे ऐसे बोलता था. Right. So more of like an opinion based GD. ओके, सो यू डिड नॉट प्रिपेयर फॉर GD, यू वेंट ऑन जस्ट फॉर लाइक नॉर्मल सिटीजन का क्या ओपिनियन होता है ना, कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. जैसे लोग गांव में और घर पे बैठ के बातें करते हैं कि मोदी साहब ये नहीं कर रहे हैं, तो यू वेंट ऑन विद दैट अप्रोच, है ना. यू डिडंट प्रिपेयर एनीथिंग वेल कि हाँ मतलब जीके. But I won't suggest others to do this. Always prepare and go. क्योंकि it worked out for me. राइट, इट वर्कड आउट फॉर यू, तो सबके लिए कुछ नहीं, माइट बी नॉट वर्क, तो प्रिपरेशन करके जाना बेटर है ना. सो व्हाट शुड बी द GD अप्रोच, इट इज डिफरेंट फ्रॉम PPDT की क्या अंतर है, या सेम रहना चाहिए कि इन एंड आउट करके प्ले करना चाहिए, हाउ टू टैकल द GD पोर्शन, क्योंकि सब बोलेंगे, सबके पास कुछ ना कुछ रहेगा बोलने के लिए, तो क्या करना है GD1 GD2 में, कैसे टैकल करना है, कैसे पॉइंट्स को लाना है और असेसर के सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है?
So like the main difference in GD for PBDT and GD for year is that you need not come to a conclusion. इधर तो बस वैल्यूएशन कर लो. जो points आपके पास है, you just say it and come back. Okay. If you speak for like 3 minutes, I mean 3 times, it's like well and good. Be a team player. Like what they check here is that whether you're like letting your group mates also speak, whether you're giving chances also to them. Okay. So if you're like able to do that, and if you're like if you can portray yourself as a very good team player, I think you'll be like pointed much better and much higher. तो कभी ऐसा हुआ कि जीडी में कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा हो और फिर ही और लाइक गेट रिकमेंडेड एंड फिर तुम्हें लगा कि यार ये क्या है और दिस गाय गॉट रिकमेंडेड, ऐसी वाली फीलिंग आई कभी किसी अटेम्प्ट में? Nah, yeah, like there are a lot of people who spoke throughout the GD, but in my case, I didn't find anybody as such who got recommended. I was lucky enough to never face such situation. Okay, fine. So that's what about GD. So now after that GOR आता है and then आता है PGT. So GOR, like GOR में तो पता ही नहीं चलता ना कि you are performing well or not. कैसे आइडिया लगता है? How do you feel? कुछ आइडिया लगता है कि कभी कि कैसा किया कैसा नहीं किया? कोई मुझे नहीं लगा कि कोई डिफरेंस हम जान पाते हैं. How what do you think? कैसे अप्रोच करना चाहिए GOR को? Group obstacle race, right? Snake race. हाँ, snake race. Okay, snake race के लिए ऐसा नहीं है like help your team. It's actually fun task. Right. Enjoy कर लो. हाँ, दिमाग मत सोचो. हाँ. Just go enjoy. Like कभी भी what they check is that like whether you're helping out your teammates, whether you're like taking initiatives. It's more of like a helping mentality is what I feel. क्योंकि वो 8 feet ball है, सब can't no, like everybody can't climb over that. So are you helping your teammates? Are you like letting them go first? और वो वॉकरे भी होते हैं ना, are you like put like telling that with full josh and all. Okay. I guess like they check that. So any fun war cry you had in your SSB? कोई थी war I cry? guess you know the answer for this question. So like I want you to tell everybody what was the war cry of our like in which batch we met. तो वो war cry क्या था? It's like you tell. क्या? Usually वॉकरे ऐसा होता है कि वंदे मातरम भारत माता की जय ऐसा होता है. In our batch we wanted to try something different. So our war cry was kachare and everybody used to say ooh ha ooh ha. Right. This was the war cry. I think this was the funniest war cry क्योंकि in half we also got confused कि क्या बोलना है, हुआ बोलना है कि कच्चा बोलना है. So I think this was different. So after this GOR happened, what's your approach? What do you think? How should we approach for PGT? Because that is one of the most important tasks I feel कि है SSB में. What do you think? कैसे करना चाहिए? PGT is like very important. For PGT, if you're having good ideas, go in front, implement it. What I've seen and what I feel is that majority of them they keep talking. कैसे implement करना है नहीं, they start debating there. Just try it out. Just do it. Okay. अगर work किया तो well and good. If not, go with the other person's idea. Right. And if you're not having any ideas as such, be a team player. Help the group mate. It's fine. It can be as simple as tying a rope. It can be as simple as taking the load. Do that. ठीक है. तो that is the only approach कि आइडिया है तो लगाओ, काम करो, और नहीं है तो हेल्प करो. That is the only thing we can do. Help. So इतने सारे PGTs दिए. So what do you think कि कौन से PGT में कोई फनी इंसिडेंट था कि आइडियाज लग रहे हैं कुछ, क्योंकि PGT में फनी इंसिडेंट्स होते हैं. कुछ 2-4 लोग कर रहे थे, 2-4 लोग खड़े होते हैं. तो एनी इंसिडेंट विच यू लाइक टू कोड, अभी कोई अगर याद आ रहा हो, 10 अटेम्प्ट्स हो गए, तो एनी इंसिडेंट कि कहीं पे कुछ फनी था. Recommendation attempt पे, IMA attempt पे, what I did was that ऐसे पकड़ा, प्लान पकड़ा था, पीछे एक बंदर रहता था, like दोनों में टीम is there. Right. I didn't say ऐसे, I just like turned, उसके ऊपर मार दिया, वो गिर गया. He got it and he fell. Okay, he fell down on the like He fell down. ground. Okay. Fell down on the ground. फिर क्या? I went there and like, sorry, GT आया, क्या हुआ भैया? Like क्या हुआ बेटा? Are you like all okay? It's like fine. He fell down, वो हुआ. और स्नेक रेस में बहुत सारे गिरते थे मेरे ऊपर. अच्छा, तेरे ऊपर गिर जाते थे स्नेक रेस पे? हाँ, ऐसे चढ़ने के लिए like we used to like try to push him up, right? So he used to like fall back on me. There were like 2 incidents I think like that. GOR में the way how we push people sometimes it also get funny, right? You push sometimes like this. it Like, happens. we don't have any other place to. Right. So okay, so that was the thing. Yeah. So after PGT, that is a simple thing कि ideas आ रहे हैं तो execute करो, नहीं आ रहे हैं तो have with the group and tie the rope and everything what you have, है ना? Now after PGT, the group got divided in HGT. So HGT is very easy. I feel कि इसमें group divide हो जाता है तो रहता है perform करना. What do you feel कि क्या different क्या होता है PGT, like same approach Like, रहनी चाहिए? Same approach, it becomes more easier than your Right. PGT. Group छोटा हो जाता है ना?
Yeah. एंड आफ्टर दैट फिर अपना जो टास्क होते हैं लाइक सीटी, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, एफजीटी, दिस आर द टास्क। तो इसमें से व्हाट डू यू फील कि हाउ शुड वी अप्रोच, क्योंकि मुझे लगता है कि अप्रोच ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हमने 5 ऑब्स्टिकल करने वाले को भी देखा रिकमेंड देते हुए, 10 को भी देखा, कुछ ने 12-13 भी करी है आर्मी अटेम्प्ट्स में, तो उनको भी देखा। सो व्हाट डू यू फील कि अप्रोच ज़्यादा मैटर कर रही है या फिर क्या क्या मैटर कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो टास्क होते हैं, वो थोड़े ईजी से हो जाते हैं, एफजीटी, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, व्हाट डू यू थिंक? Well, for like individual obstacles, they want to see if you're like scared of attempting an obstacle or not. Okay. बस वो टाइगर लीप वगैरह कर रहे थे, like are you scared of attempting that? And the way in which you plan, it should be like very random. As long as like you do the first task here, you go there to the other end, you come back here. That shouldn't be the case. If you like plan it properly, like एक proper plan है, एक cycle जैसे जा रहा है, so it's fine. And the way you like do it without any like without like they check whether you're scared or not, ऐसे कुछ देखते हैं, बस उतना ही है. ठीक है, तो coming to others, हाँ, other tell others about, like you were telling about other task, what do you feel? like coming to the other tasks like FGT for CT and all, it's like your performance out there that matters. Okay, so in recommendation you got CT easily या फिर टफ, क्योंकि हर जगह बोलते हैं कि टफ CT मिला तो रिकमेंड हो रहे हैं, इजी CT मिला तो नहीं हो रहे हैं, what do you feel, इस पे क्या था, मिला इजी या फिर टफ मिला था, दोनों बारी? IMAP I got the toughest task. Okay. In AFA I got very mediocre task. Okay. Easy था, you can like you can classify it as easy only. Okay. IMAP I got the So difficult. IMA में टफेस्ट वाला था, तो you have the feeling कि हाँ हाँ. रिकमेंडेशन हो सकता है, like I हाँ. ठीक है, and in Air Force you got the middle one, so what was your feeling like when you did the command task, कि क्या लग रहा था हो जाएगा रिकमेंडेशन, what are you feeling? Like मेरा like after my interview I like made up my mind नहीं होगा पक्का. अच्छा, लाइक इंटरव्यू तो वो तो हो गया, फिर सीटी हो गया, एफजीटी हो गया, आईओ हो गया, सो कॉन्फ्रेंस भी मैटर करता है, लाइक यू हैव बीन टू बॉर्डर लाइन केसेस ट्वाइस, है ना, 2 बारी 7th 8th अटेम्प्ट में यू हैड बॉर्डर लाइन केसेस, तो व्हाट डू यू फील कि कॉन्फ्रेंस को कैसे टैकल करें, क्योंकि नहीं हुआ 1-2 बारी तो तुझसे भी टैकल नहीं हुआ है, रह गया है ना, कहीं कहीं पे थोड़ा सा ब्लंडर हो गया या क्या हो गया, तो हाउ मच इम्पोर्टेंस डज कॉन्फ्रेंस हैव आफ्टर दिस ऑल द प्रोसेसेस? Like everybody will say conference is just a formality. That's not what I feel. Conference is as equally important as your psych, interview and GTO. क्योंकि it plays a vital role if you are in borderline case. One thing happened to me in my Air Force interview. Okay, what they usually say that during briefing, the BCO comes at the last day. He comes and tells that don't take conference as the means to answer the questions you have missed out in the interview. Right. तो मैंने सोचा कि नहीं पढ़ना है, जो मुझे मैंने मिस किया नहीं पढ़ना है, स्टिल मारो जाओ आओ. तो what actually happened in my attempt where I got confidence was that the moment I entered he asked me how are you good. फिर पूछने लगा जो क्वेश्चंस मैंने मिस किए, सेम क्वेश्चन, he asked me what is turbofan, what are different types of turbofan engines, Okay. which is faster, turboprop. These questions I missed out. These were the exact same questions which I missed out in my interview. Same questions पूछा. अच्छा. And I believed the words of BSO. I didn't study anything. Had you told that, I would have got a chance to at least get ready. Yeah, you might have got the So I chance. had a chance there. I missed it out. राइट, सो आई थिंक Yeah. कि जो डीएसओ बोलते हैं कि अभी कुछ प्रिपेयर मत करो, नथिंग इज गोइंग टू बी आस्क्ड, ये बिलीव नहीं करना है, थोड़ा प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए इफ यू मिस्ड आउट सम क्वेश्चन इन Yeah. इंटरव्यू, राइट. सो कभी Yeah. डाउट लाइन प्रोसेस में जब डाउट केस था तो दे आस्क्ड एसआरटीज और एनीथिंग, कभी पूछा ऐसा? नहीं. मेरे से नहीं पूछा अभी तक. ठीक है, तो Last two attempts were like sure shot. हाँ, तो लास्ट 2 अटेम्प्ट्स वर श्योर शॉट, उसके पहले जो बॉर्डर लाइन था तो जस्ट दे आस्क्ड फ्यू इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, राइट, दे हैव बीन वेट एंड एवरीथिंग, हाँ, और yeah. कुछ ज्यादा एसआरटीज वगैरह कभी नहीं. नहीं पूछा, है ना. नहीं पूछा. ठीक है, तो आफ्टर दिस होल जर्नी लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट, रिकमेंडेशन, मेडिकल आउट, एवरीथिंग दैट हैपेंड, एवरीथिंग जो हो सकता है एसएसबी में वो सब हो गया तेरे साथ एकेडमी वाला छोड़ के. Yeah. सो नाउ व्हाट यू फील कि हाउ गुड दिस इज प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, की अगर ये जो एसएसबी दे रहे हैं लोग कि ये इम्प्रूव कर पाते हैं इस प्रोसेस में, नहीं कि हाउ दे शुड अप्रोच, क्योंकि एट द एंड सबको रिकमेंड होना है, और क्या लोग ये जान सकते हैं कि वेदर दे शुड ट्राई और नॉट, या फिर उनको ट्राई करना चाहिए लास्ट अटेम्प्ट तक? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस, क्योंकि ये बहुत वेग है, मुझे ऐसा लगता है, तुम क्या फील करते हो? It is vague, but there is always a scope for improvement. क्योंकि I personally have seen people who were like I thought wouldn't even get recommended, and वो like 5-6 attempt के बाद recommend हुए हैं. Okay. So it all comes down to identifying your mistakes, comparing with the people who got recommended in your batch. उसके साथ like you can compare and find out where you're standing, and eventually take yourself to that position, take yourself to that level. Okay. So they have a set standard. अगर like the SSB has got a set standard,
If you meet that standard, they'll take you in, else they won't. इतना ही है फंडा. ये भी है So there is कि always a chance to improve. तो ओवर परफॉर्म करने वाले कैंडिडेट भी मेरे ख्याल से सेलेक्ट नहीं होते हैं. लाइक देयर इज अ थिंग कि अगर 10 है, 10 ही हिट कर दिया तो यू विल गेट सेलेक्टेड. इफ यू हिट 9 नहीं होगा, और 11 12 भी हिट कर दिया तो भी नहीं होगा. ऐसा है कि ओवर परफॉर्म. कभी किसी को देखा ओवर परफॉर्म करते हुए कि यार बहुत ज्यादा ही परफॉर्म कर दिया, मिला था कोई? हाँ, जीपीओ पे कभी कभी देखता हूँ वैसे. ठीक है. बट दे आर लुकिंग फॉर द राइट फिक्स. राइट. सो व्हाट यू विल से कि जो अभी कॉन्फ्रेंस आउट होके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी आ रहे होंगे कॉन्फ्रेंस आउट होके, हो सकता है लोग अभी देख रहे हो ट्रेन में बैठ के कॉन्फ्रेंस आउट होके आ रहे हो, एक और रिकमेंडेड कैंडिडेट का इंटरव्यू देख रहे हैं. सो व्हाट्स योर ओपिनियन कि यार इतनी बारी कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे थे, क्योंकि मोरल तो कभी ना कभी डाउन हुआ ही होगा कि हाँ यार नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, कमी है. फर्स्ट वो आता है कि कोई मेरे अंदर नहीं है, आई डोंट हैव इट इन, है ना, वो वाला थॉट आ जाता है कि यार क्यों. तो हाउ टू टैकल दैट, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो टैकल नहीं कर पाए तो फिर लूज करते जाते हैं चांसेस भी और अटेम्प्ट्स भी. कैसे करना है उसको, वो बताओ. Self doubt is like it's an inseparable part of your SSB journey. क्योंकि the moment you get confidence or the moment you get screened, you will obviously you'll be having self doubt. Right. So it's always good to take it in the right side. Like confidence होना चाहिए अपने ऊपर. Because like I too faced the confidence doubt scenarios, I too faced everything as such. So that kept me going. It's your self belief, self confidence that actually will push you. ऐसे motivation सब it will like end. 3 attempt 4 attempt motivation will go down. हाँ, खत्म हो It's जाता your self belief that will like push you on. Right. Apart from that. तो अभी क्या है कि जैसे कि इतने सारे कैंडिडेट्स हैं जा रहे हैं एसएसबी में, तो व्हाट यू फील कि कोचिंग की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई है, गाइडेंस की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई है, क्योंकि सिनेरियोस 10 साल पहले से बहुत चेंज हो चुके हैं. आज तो हर बंदा ही शायद कुछ ना कोई गाइडेंस लेके जा रहा है. तो फिर भी कुछ लोग नहीं लेके जा रहे हैं. तो क्या तुम्हें लगता है कि कितना इंपॉर्टेंस है गाइडेंस लेके जाना और ना लेके जाने में, क्या फर्क आता है? Guidance is like, as far as I am concerned, guidance is very important. क्योंकि if you are that candidate, if you are a candidate who has got the potential, like if you believe that कुछ भी बिना guidance से if you can crack it, I think like you should not take. Okay. Otherwise, I don't think like almost 95% are not confident about their own skills. Right. So it'd be better if you can take guidance from somebody who's seen the process. Say like at least talk. It's not necessary you should take coaching itself. Right. At least take them, talk with them, ask them what is the procedure. Right. Get to know about what is being asked, what is their expectation. Accustom yourself with the process. Right. So I feel that is very important. ठीक है. और ये जो सबसे बड़ा पॉइंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ गोल्डन अटेम्प्ट. व्हाट डू यू थिंक कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रिपरेशन कैसे करके जानी चाहिए, अच्छे तरीके से करनी चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए, कोचिंग लेना चाहिए, या फिर सेकंड फ्रीक्वेंट थर्ड अटेम्प्ट से कोचिंग वोचिंग ट्राई करना चाहिए, पहला अटेम्प्ट रॉ जाना चाहिए? तो इस पे क्या इम्पैक्ट है, क्या थॉट प्रोसेस है? First attempt is obviously your golden attempt. क्योंकि even if you commit small mistakes, you will be overlooked. Right. They won't treat them as like very big thing. If you have the potential, like if you have the means and capabilities to take coaching or take guidance, Right. I would suggest you to go for it. Because it's going to help you out only. And also be aware of things like be aware of coaching academies which only go for money. Don't join coaching academies which are money minded. Like, there are a lot of, it's a fact. Right. There are a lot of coaching academies where they are like looking for only money. Right. So don't join them. That's a tough thing, like because there are like you just tell me you do this analysis and all, right? Right. Which coaching to join, which coaching not to join. So वो देख लो and then decide. Right. If the guy is genuine, if you feel that he can help you out, go for it. Right. So the whole thing is that कि खुद में पहला तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है. अगर वो नहीं है तो फिर कोई चीज़ टैकल होने वाला नहीं है. सेकेंड, गाइडेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इफ़ यू आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट कि मेरे से हो पाएगा, है ना. और अभी मुझे लगता है कि शायद गाइडेंस इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतनी मिथ्स हैं एसएसबी के बारे में. कोई कहता है कि ये पिंक कलर की टी शर्ट पहन के जाओ तो रिकमेंड हो जाओगे, उसने बात नहीं करी तो वो रिकमेंड हो गया, उसने कुछ बोला नहीं. तो आई थिंक ये, क्योंकि बहुत लोगों को प्रोसेस के बारे में आइडिया नहीं है, वो हमेशा अपने एंगल से देखते हैं. जैसे कि होता है ना कि स्क्रीनिंग में गए, स्टोरी परफॉर्म करी, स्क्रीन आउट हो गए, तो लगता है कि यार हमने तो बहुत बेस्ट करा था, पर कुछ ना कुछ तो रह जाता है जो असेसर देखता है, बायसनेस आती है. तो गाइडेंस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल मेरे ख्याल से प्ले करता है. आफ्टर दिस होल प्रोसेस खत्म हो गया, अभी क्या रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? एनडीए इज द बेस्ट अटेम्प्ट, सीडीएस इज द बेस्ट अटेम्प्ट, या फिर ये सब सारी ग्रेजुएशन एंट्रीज, कौन सी एंट्रीज ज़्यादा अच्छी होती है? व्हाट यू फील? दी तो है तूने सारी. NDA is the most best attempt. NDA. I'll tell you the reason. Okay, the recommendation rate in NDA is like similar to the screening rate of graduation entries. Yes.
yes. Around 15-20 get recommended in one batch. Right, right. It's always better if you can go through NDA. फिर सीरियस फिर आपका. ठीक है. और वो जो टेक्निकल एंट्रीज आती हैं TES वगैरह, आई थिंक ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. इसमें भी बहुत रिकमेंडेशंस होते हैं, है ना? Yeah. तो वो 10+2 वाले में explaining तो अच्छा रहता है चांस 10+2 एंट्री, Yeah. है ना? बाकी तो Exactly. ग्रेजुएशन वाले में एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो ज़्यादा ही डिमांड हाँ. करने लगते हैं कि आधा ऑफिसर चाहिए. क्योंकि या मोल्डिंग करना लाइक डिफिकल्ट इन ग्रेजुएशन एटलीस्ट. या सो अभी रिकमेंडेशन के पहले और रिकमेंडेशन के बाद वो फीमेल इंटरेक्शन में कितना चेंज आता है? क्या होता है उसके बाद? वो अटेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है, कि या फिर वो दोस्तों से अटेंशन, फैमिली से अटेंशन कि यार रिकमेंड हो गया एंड एवरीथिंग बिफोर मेडिकल्स, लाइक यू गॉट योर फाइनल थिंग, तो फीलिंग तो यू गुड, ऐसा अच्छा लगा कि हाँ हो गया रिकमेंड. सो व्हाट वर द वो अटेंशन मिलने लगता है ना थोड़ा थोड़ा सा कि यार रिकमेंड हो गया, अभी ये बताएगा कैसे क्या करना है. तो वो मिला था, कितना मिला और किससे किससे मिला? Like for me, it is like same because क्योंकि like I didn't post anywhere that I got recommended. Only close friends and family that I got recommended. Okay. And I know like I got few of my friends who have posted. And उसके बाद they ask क्या करना है गाइडेंस लेने के लिए, बहुत लड़कियां मिलता है. So you can be like chill about that. ओके ठीक है. तो अभी IMA और AFA हो गया, फिर मेडिकल आउट हो गया. सो व्हाट्स योर प्लानिंग नाउ अभी? क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जैसे SSB अटेम्प्ट तेरे खत्म हो गए या फिर ये मेडिकल्स की वजह से हो गए, तो अभी बहुतों के SSB अटेम्प्ट खत्म हो गए, दे आर डन विद द सिस्टम. सो व्हाट्स योर सजेशन टू देम? क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह जाता है ना कि वी डिडंट मेक इट फाइनली इनटू द फोर्सेस. तो क्या कहना चाहिए इस पे? फाइनल मैसेज. One message is that like if you have reached, if you are like nearing the age of 22-23 and if you are like nearing the end of your attempts, it's always wise to have a backup plan. Always wise to have a backup plan. क्योंकि as like all these repeaters might have known that like it's a very unpredictable process. Right. Even if the best of the candidates, like you cannot even say that even if you are the best of the candidates, chances are like almost it can vary from nil to 100%. Right. That you'll get recommended. So Right. have a backup plan. And for me, what I'm currently, I'm like figuring it out because like I was like a candidate who was like only thinking of forces. After 12, करना है तो force करना, नहीं तो वरना कुछ नहीं करना. I was of that opinion. अभी I got the taste of this, and now I'm like figuring it out. I got like few plans in my head. I have like worked on that now. सो इट्स रियलिटी की सबसे पहले रियलिटी एक्सेप्ट कर ले, एंड इफ यू आर अप्रोचिंग लार्जर अटेम्प्ट्स तो प्लान बी होना चाहिए. इन रियलिटी तो होना चाहिए कि एक्चुअली में प्लान बी रहता है तो आप बेटर परफॉर्म भी कर पाते हैं मेरे ख्याल से, कॉन्फिडेंस भी आता है. क्योंकि आफ्टर गेटिंग अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो आप जाके अपना डेली रूटीन शेड्यूल कर सकते हैं, और वो जो 3 टाइम के लिए आप मेहनत कर रहे थे वो आपको एटलीस्ट खाना तो मिलेगा अगर आपने बैकअप प्लान प्रिपेयर करके रखा है. ठीक है. So we have discussed everything, Surya. So what's your final message to the candidates? How they should approach and everything? कि क्या नहीं करना और क्या करना है basically. So ताकि वो easily थोड़ा जल्दी recommend हो पाए पहले या दूसरे attempt में. The simple message which I would like to give is that like be original, be yourself. Don't be somebody whom you are not. Like don't try to fake it in front of the assessors so that they get impressed. क्योंकि like they are all like 50-55 years old. Right. They are like they can very easily catch whatever lies you tell. Don't be that. And by original I mean to tell that make that personality of yourself which matches the SSB, which matches the SSB standard. ऐसा नहीं होना चाहिए कि like you sleep throughout the day, you don't work out, you don't study, and you're being original. That doesn't work. Right. You should have that personality which is suitable for SSB and should be original. So that's it. ठीक है. Thank you for joining Surya here and saying this everything और ये मैसेज लोगों तक देने के लिए. I hope people will get something from this interview, and I'll put out that Instagram of Surya here. So if you have any doubt, you can contact him, reach him, है ना, and आप पूछ सकते हो if you have any questions also. And so thank you Surya for joining us, and I hope everybody have enjoyed this interview process. Thank you so much. Thank you, man. It was a pleasure talking to you. Thank you.